We are back to using Sangramji for our business. That's what we do in free time. We tell Sangramji कि आप है ना स्विगी और जोमेटो का लिंक अपने फ्रेंड सर्कल के ग्रुप्स में भेज दो, ठीक है? You can start doing that because I think I'm sorted now. ब्रॉडकास्ट में से 10 लोग या 20 लोग का एक वो बनाओ ग्रुप एंड उन सब में आप मेरा ये रेस्टोरेंट iCloud किचन का लिंक भेज दो, जोमेटो और स्विगी का, ठीक है? संग्राम जी, कैन यू प्लीज डू दैट इन योर लाइव चैट्स ऑल्सो? कैन वी जस्ट गेट इन टू दैट जोन प्लीज? मुझे मेरा बिजनेस है ऑफ सेलिंग गुड फूड, हेल्दी फूड, so please cooperate and promote it among your भाई साहब and गुड़िया. Zomato tapes के ऊपर तो मुझे अभी तक कुछ अपडेट नहीं मिला है because they have told me to wait for 24 to 48 hours. I'm attaching the email as we speak. But Swiggy के orange tapes के ऊपर मैंने अपनी request रखी थी, so they immediately replied to me. But the reply is that the Ministry of Environment, Forest, Climate Change has issued a notification banning single-use plastics with effect from 1st July 2022. Items such as plastic cutlery, including spoons, forks, knives, etc., and other single-use plastic items mentioned in the said notification should no longer be used, stored, distributed, manufactured, imported, and/or sold. तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ. आई अंडरस्टैंड देर इज़ अ लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर क्लाइमेट कंट्रोल measurements to take place, but you need to understand that people need to live to see what's in store for them in the coming years. Now, for people to live, they need to earn money because they need to spend money to be able to buy food or to live life. So for earning money, if they are into the food business, it's a chain. For earning money, if they are into the food business, they need to sell that food. अब आप फूड की सेलिंग ऑन ग्राउंड सेल से कर सकते हैं, ऑनलाइन सेल से कर सकते हैं. बट ऑनलाइन सेल्स में यू नीड टू सेल द फूड वाया यूज ऑफ प्लास्टिक. हाउ विल यू पैक अ फूड इन अ नॉन प्लास्टिक कंटेनर? ऑल कंटेनर्स जो हम यूज करते हैं फूड पैक करने के लिए, दे आर प्लास्टिक कंटेनर्स. मोस्टली तरी वाली सब्जी हो, ग्रेवी सब्जी हो, वो कैसे जाएगी? प्लास्टिक कंटेनर में जाएगी या प्लास्टिक की थैली में जाएगी. अनलेस एंड अनटिल आप टप्परवेयर के डब्बे देना शुरू करो या ग्लास के बॉक्सेस देना शुरू करो, बट दैट्स गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर नॉर्मल पीपल हु आर इनटू द फूड बिजनेस और फॉर पीपल हु आर एट स्टार्टअप स्टेज. सो मुझे लगता है द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज शुड प्रोवाइड द स्टार्टअप्स via these online platforms, Swiggy and Zomato, alternatives. So the Ministry of Environment, Forest and Climate Change should provide alternatives to these online platforms who are already established in the market, so that they can provide to startups like us alternatives to use instead of using single-use plastic, because there's a ban on single-use plastic. We understand efforts need to be made to make sure that there is less misuse of nature, because there is a lot of reshuffling going on in the climate, whether it be India or rest of the world. We need to take measures to prevent the use of single-use plastic, etc., etc. I know it all, but what do you do when you're in the food business and you want to sell your food to your customers and that food can be packed only in plastic boxes? How do you sell your food? अब यहाँ पर मैं स्टॉल के ऊपर आलू और प्याज बेचती हूँ, तो मैं जब अपने स्टॉल के ऊपर आलू और प्याज बेचती हूँ तब देयर आर लॉट ऑफ कस्टमर्स जो थैली लेके नहीं आते. दे इंसिस्ट ऑन गिविंग आलू एंड प्याज इन देयर प्लास्टिक की थैली. सो व्हाट डू आई डू? I have to buy plastic की थैली and put it on the stall because the boy says that the customer comes, they want the plastic की थैली because they say कि हमारी नॉर्मल कपड़े की थैली में चीज़ें खराब हो जाएगी, हमको प्लास्टिक की थैली दो. So we understand the awareness that the governments have to do all over the world. But the governments, before banning, need to provide alternative because plastic तो यूज़ हो रहा है. ऐसा तो है ही नहीं कि प्लास्टिक यूज़ नहीं हो रहा. मैं भी यूज़ कर रही हूँ प्लास्टिक, सब लोग यूज़ कर रहे हो प्लास्टिक. सो हाउ डू यू फिगर आउट अ सोल्यूशन? You figure out a solution by providing a replacement, by providing an alternative to the use of single plastic. Anyways, got the GST number application of
Gymnasio Fitness Center is dependent on my Aadhaar card. Now, आधार कार्ड नंबर वी आर ऑल अवेयर कि हम वो शेयर करते हैं जब हम कहीं भी आधार कार्ड नंबर डालते हैं, मगर यहाँ पे आधार कार्ड का जो एनरोलमेंट नंबर है वो एनरोलमेंट हमने कब किया, कौन से डेट पे, कौन से टाइम पे वो रिक्वायरमेंट अभी उत्पन्न हो गई है उस वेबसाइट पे, जिस वेबसाइट पे मैंने जीएसटी एप्लीकेशन करी है फॉर माय फूड बिजनेस कंपनी. सो अब मैं कब गई आधार कार्ड का बायोमेट्रिक्स देने, मैंने कौन सी जगह से आधार कार्ड का बायोमेट्रिक्स करवाया, विच सेंटर. ना आई डोंट हैव दैट इन्फॉर्मेशन बिकॉज मैंने हर वक्त वीडियोस तो नहीं बनाए ना. वीडियोस तो मैं अभी रिसेंटली बनाने लगी हूँ 3-4 साल से, और आधार कार्ड तो मैंने कब लिया होगा, बहुत पहले लिया होगा. So now I don't know what's going to be the solution for this because I have to find the receipt जहाँ मुझे enrollment number मिला, because उस receipt के ऊपर date और time stamp होगा. It's a good thing that this is happening because आधार कार्ड ऐसे ही बन जाते हैं लोगों के, and हम सबको पता है कि कैसे रोहिंग्यानास को आधार कार्ड बना के दे दिए जाते हैं. So it's a good activity that now they are asking the date and time stamp कि आपने आधार कार्ड कौन से सेंटर पे बनाया. Appreciate it. Everything is perfect. I love it when people work like this way. But I am also stuck right now. I am also very badly stuck. I don't know where my receipt is. Let me figure it out tomorrow in the day after my yoga if I can find the enrollment paper where the receipt number has the date and the time stamp of my Aadhaar. Wow. This is awesome. This is too good. This is like a googly. पायल डेट और टाइम स्टैम्प की बात करती है, यहाँ पे एक गूगली फेंक दिया. बट इट्स अ गुड गूगली. इट्स गुड फॉर द कंट्री बिकॉज आधार कार्ड ऐसे ही बन रहे हैं विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी एंड पीपल आर जस्ट बिकमिंग इंडियन सिटीजन्स पैसे दे के इलीगली. सो वी नीड टू हैव दिस अकाउंटेबिलिटी ऑफ डेट एंड टाइम स्टैम्प कि कहाँ पर आपने जाकर अपना बायोमेट्रिक्स दिया और आपका आधार कार्ड बना. वेरी इंपॉर्टेंट. You can see my bonda is down. That means I've done my massage. Yeah, I shut the restaurant. After all, I'm the boss now. So the restaurant, iCloud Kitchen can be shut. I shut it. Did my massage. Became more normal. Trying to understand. Actually, कि लोग इतने गिरे हुए क्यों होते हैं. Do you understand? Yeah. But then that's the way it is. It's a democratic country. कोई कुछ भी बोल सकता है. यहाँ पे कोई कुछ कर भी लेता है. मतलब आप समझते हो. So yeah. No, I'm not going to Delhi. 2 दिन के लिए मैं क्या जाऊँ. मैं 1 हफ्ते की छुट्टी लूँगी so that I can rest well. So 1 हफ्ते की छुट्टी लेने के लिए अब भी टाइम नहीं है. So मसाज करा दिया. Now I'm switched on the restaurant for some time, for an hour or so. And then I will sleep. I'm a good girl. I'm a very good girl.